Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture of Business Mathematics MTH367. Today we start with chapter number 4, which is named as Mathematical Functions. तो आज हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में है कि enable the reader to understand the nature and notation of mathematical functions, यानी कि रीडर को टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसकी जो नोटेशन है उससे फेमिलियर किया जाए। प्रोवाइड इलस्ट्रेशंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, कि मैथमेटिकल फंक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़ा सा वाज़ेह किया जाए। प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रीफली हम मेंशन करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कौन से हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है। सो व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर वाज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद n ग्रेटर देन 2। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को स्टडी किया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से फॉर n = 3। उसमें हमने 3 एग्जांपल्स की। उन 3 एग्जांपल्स में हमने देखा कि जो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो तीनों हमने हासिल किए। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हमने एंड किया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की हमने एप्लीकेशन टू प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम में। प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम हमने स्टडी की और उनमें हमने लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन को देखा। टुडेज टॉपिक्स, तो आज के टॉपिक क्या क्या है। टुडेज टॉपिक्स वी स्टार्ट विद फंक्शंस, देन द नेक्स्ट वन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, यानी डोमेन और रेंज क्या होती है फंक्शन की। देन वी मूव टू द मल्टीवेरिएट फंक्शंस एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वाई फंक्शंस, फंक्शंस को हम क्यों स्टडी करते हैं एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। So identification of the relevant mathematical representation of the real world phenomena is done by mathematical modeling, यानी जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग से स्टडी करते हैं। If a model is a good approximation, it can be very useful in studying the reality and decision making in the real world problem। अगर हमने जो मॉडल बनाया है वो एक अच्छा मॉडल है और अच्छी तरीके से हकीकी पिक्चर को ज़ाहिर करता है, तो उससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है रियल वर्ल्ड के मुताबिक बहुत इम्प्रूव होती है। इन मैथमेटिकल मॉडल्स द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शंस। जो मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर रिलेशन होते हैं मुख्तलिफ अशिया के दरमियान, मुख्तलिफ फिनोमिना के दरमियान, उसको हम मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्यूशन ऑफ ए फंक्शन, यानी अगर इसको इंट्यूटिवली अगर देखा जाए तो फंक्शन क्या है। सो अ फंक्शन कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जिस तरह के हमारा कंप्यूटर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, इसी तरह फंक्शन भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। सो अ सेट ऑफ इनपुट्स इज प्रोवाइडेड टू अ मैथमेटिकल रूल विच ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट्स इनटू अ स्पेसिफिक आउटपुट्स। तो जिस तरह हम कंप्यूटर के मुख्तलिफ इनपुट्स देते हैं तो वो हमें आउटपुट्स देता है। सिमिलरली फंक्शंस को भी हम डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और वो कुछ रूल को इस्तेमाल करते हुए हमें एक ख़ास किस्म की आउटपुट देता है। जिस तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसको हम कोई जो इनपुट देते हैं तो वो जो पीछे रूल है उसको यूज़ करते हुए हमें कोई आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू x। इस इक्वेशन को आप कंसिडर करें। इनपुट सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी इनपुट क्या है यहाँ पे, सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ x। मैथमेटिकल रूल क्या है, मैथमेटिकल रूल क्या है, इट इज़ x। आउटपुट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन या मैथमेटिकल रूल। यानी ये जो मैथमेटिकल रूल है इससे जो हमारे पास y की वैल्यू आती है वो है हमारी आउटपुट। So this was the intuitional picture of a function. So formally हम किस तरह से डिफाइन करते हैं।
A function is a mathematical rule that assigns to each input value one and only one output value. यानी कोई एक इनपुट वैल्यू होगी तो उसकी आउटपुट वैल्यू भी एक ही होगी. डेफिनेशन, द डोमेन, यानी डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या चीज़ होती है. द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़. यानी इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन. एंड the range of a function is the set of all possible output values. यानी वो तमाम वैल्यूज जो कि उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास आउटपुट आ सकती है उसको हम रेंज कहते हैं. सम एग्जांपल्स. द फेयर ऑफ टैक्सी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड द डे ऑफ द वीक. जैसे कि हमें पता है कि जो टैक्सी का फेयर है एक तो फासले पे मुनहसर होता है और दूसरा डे ऑफ द वीक, यानी उन डेज़ में हमारी जैसे करंट ऑब्जर्वेशन है कि छुट्टी के दिन हो या रात का या उन दिनों में जिन दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो उन दिनों में फेयर ज़्यादा होता है, यूजुअली नॉर्मल होता है. द फी स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन ऑन कैंपस ऑफ कैंपस यू आर एडमिटिंग इन. फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का मुख्तलिफ होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप जिस किस्म की एजुकेशन ले रहे हैं, ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है. आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ होगा, आप नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ होगा. इसी तरह द हाउस प्राइसेस डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द हाउस. इसी तरह हमारे यहाँ जो हाउस प्राइसेस होती हैं वो भी लोकेशन पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं. तो देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे जिन चीज़ों पे डिपेंड किया कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पे डिपेंड करती हैं. इसी तरह फंक्शन जो होता है बेसिकली ये इनपुट वैल्यू पे उसकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करती है. सो व्हाट इज द नोटेशन ऑफ ए फंक्शन? द असाइनिंग ऑफ आउटपुट वैल्यूज टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यूज इज ऑफन कॉल्ड एज मैपिंग. सो द नोटेशन एफ फ्रॉम x to y represents the mapping of the set of input values of x into the set of output values y using the mapping rule. So the equation y is equal to f of x. So ये जो notation है इसको पढ़ते हैं y is equal to f of x. The equation y is equal to f of x denotes a functional relationship between the variable x and y. Here x means the input variable and y means the output variable. यानी x आपका input variable है और y is your output variable. i.e. that is the value of y depends upon and uniquely determined by the values of x. यानी हमने यहाँ पे देखा कि y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है. जिस तरह हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखा कि हाउसेस की जो वैल्यू है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है, तो इसी तरह ये बेसिकली रिलेशनशिप है दो चीज़ों के दरमियान जो कि फंक्शन के ज़रिए ज़ाहिर हो रहा है. द इनपुट वेरिएबल इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द आउटपुट वेरिएबल इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है क्योंकि वो उसकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. लेकिन आउटपुट जो होती है वो चूँकि इनपुट पे डिपेंड करती है इसलिए हमारा आउटपुट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सो नोट दैट x इज़ नॉट ऑलवेज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड f इज़ नॉट ऑलवेज द रूल रिलेटिंग x एंड y. यानी ये जो नोटेशन है ये यूनिक नहीं है. Once the notation of function is clear, then from the given notation we can easily identify the input variable. यानी अगर आपको फंक्शन की नोटेशन क्लियर हो तो आप इनपुट और आउटपुट वेरिएबल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कि u इज़ इक्वल टू g ऑफ v. अब ये जो अगर आपको फंक्शन की नोटेशन क्लियर है तो आपको यहाँ से जाहिर हो रहा होगा कि v इज़ द इनपुट वेरिएबल, u is the output variable, g is the rule relating u and v. तो फंक्शन f जो होता है हमने देखा पिछली एग्जांपल में कि वो रूल था, लेकिन यहाँ पे f की जगह पे हमारे पास g है तो g रूल है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है u और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है v.
Example, just to show the input and output, consider the equation y is equal to x square minus 2x plus 1. So here is your input and here is your output. So let's say, okay, we have x is equal to 0. If we have x is equal to 0, then y would be equal to 0 square minus 2 times 0 plus 1. So we will have 1. हमारा x is equal to 0 पे हमारी input है y is equal to 1. So similarly, if x is equal to 1, then we can easily see that y is 0. So if we continue on with, say, x is equal to 2, then we can say that y is 1. So at x is equal to 3, we get y is equal to 4. So this is independent variable, and since output is depending on the value of x, so it is the dependent variable. So this is example of a function. This is an example of a So another example is weekly salary function. A person gets a job as a salesperson, यानी किसी एक बंदे को सेल्स पर्सन की जॉब मिलती है. His salary depends upon the number of units he sells each week. तो उसकी जो सैलरी है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल करता है उस पे डिपेंड करती है. Then dependency of weekly salary on the units sold per week can be represented as, so if we let y is weekly salary and x is number of units sold each week, then y is equal to f of x. यानी x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारा डिपेंडेंट, यानी सैलरी जो है नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी वो सेल करता है उस पर डिपेंड कर दिए. वेयर f इज़ द नेम ऑफ द सैलरी फंक्शन. तो हमने सैलरी फंक्शन को f का नाम दिया है. सेम एग्जांपल, सपोज योर एम्प्लॉयर हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर डिटरमिनिंग योर वीकली सैलरी. यानी आपकी वीकली सैलरी के लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है कि y इज़ इक्वल टू 100 टाइम x प्लस 5000. इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपकी 5000 तो आपकी सैलरी है, प्लस उसके ऊपर अगर आप एक आइटम सेल करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे. ठीक है. सो दैट्स हाउ द वीकली सैलरी function tells you to determine your weekly salary. So given any value of x will result in the value of y with respect to the function f. For example, if x is equal to 5, then y would be equal to 100 times 5 plus 5000. So this is equal to 500 plus 5000.
this is 5500. So if you sell 5 items, then your salary of the week would be 5500. So in this case basically y is equal to f of 5. So f जो है हमारा basically इस रूल से given है. So your y is equal to f of 5. So given the functional relationship f of x is equal to 5x minus 10, find f of 0, f of minus 2 and f of a plus b. So this example, so f of 0 is 5 times 0 minus 10, तो ये होगा minus 10 क्योंकि 5 times 0 से आपके पास आएगा 0. f of minus 2 is 5 times minus 2 minus 10, so this gives you minus 10 and minus 10, adding them you get minus 20. Third one is f of a plus b. So what you have to do, you just have to replace x with a plus b. जो भी x की वैल्यू होगी अंडर f, उसको आपने यहाँ पे x की जगह पे लिख देना है minus 10. So this is 5a plus 5 times b minus 10. So that's how, given a function, you evaluate the different values. Ways to define the function. So there are inverts. The output function is square of the input function. So f of x is equal to x square. तो यानी आउटपुट जो है वो इनपुट के स्क्वायर के बराबर है. Second है the output function is square of the input function plus 1. So f of x is equal to square of the function plus 1. So this method is not very easy and practical when functions involve more variables or more terms. अगर ज़्यादा इन फंक्शन के अंदर ज़्यादा टर्म्स और ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो ये एक सूटेबल तरीका नहीं है फंक्शन को डिफाइन करने का. Domain and range. So recall that the set of all possible input values is called the domain of a function. यानी तमाम possible input values को हम domain कहते हैं. And domain consists of all real values of the independent variable for which the dependent variable is defined and real. तो domain में वो तमाम real numbers शामिल होते हैं independent variable के जिसके लिए हमारा dependent variable define हो और real हो. To find the domain of a function we look at few examples. किसी function की domain find करने के लिए हम कुछ examples को अभी study करते हैं. Example number 1. So determine the domain of f of x is equal to 2x plus 3. So let's check at some values. What is f of 0? 2 times 0 plus 3 is 3. What is f of 1? 2 times 1 plus 3 is equal to 5. And what is similarly what is f of minus 1? 2 times minus 1 plus 3 is equal to 1. So you can look that x की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे f of x इसके लिए डिफाइंड है. So all the real numbers are domain of are in domain of this function. तमाम रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं. Just to do a little different example, let's move to the next example. So now determine the domain of the following function. So now we have f of x is equal to x plus 4 under the root.
Solution: since square root is not allowed to be of a negative number as we are considering only real valued functions, so it means that कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, सिर्फ उन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा when we have x plus 4 under the root is greater than equal to 0. ठीक है, squaring both sides, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर लें तो x plus 4 is greater than equal to 0. So this gives us x is greater than equal to minus 4. So domain is equal to all those values of x such that x is real, and एक तो x रियल होना चाहिए, दूसरा ये है कि x is greater than equal to minus 4. So that's how you find the domain of any function with having a square root in it. So next example है हमारे पास f of x is equal to 10 divided by 4 minus x square. So in this function, clearly the points where the function is not defined will not include in the domain of a function. Function हमने कहा कि हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए और रियल होना चाहिए. यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो एनीथिंग और डिनोमिनेटर विल मेक द फंक्शन अनडिफाइंड. तो इसलिए हम वो वैल्यूज़ निकालेंगे जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 है, तो उन वैल्यूज़ को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर्स पे हमारा ये फंक्शन डिफाइंड होगा. तो इसीलिए बाकी तमाम नंबर्स इसकी डोमेन में होंगे. So here the function is not defined for some values when denominator is 0. So when we have 4 minus x square is equal to 0. So this means we have x square is equal to 4. So this has two solutions, 2 and minus 2. So apart from 2 and minus 2, all the real numbers are in the domain of this function. Another way to see this, that you factorize these two equations, you get 2 minus x into 2 plus x equal to is not equal to 0. अगर product of two numbers is not equal to 0, then both of them are not 0. 2 minus x is not 0 and 2 plus x is not equal to 0. So this implies that x is not equal to 2, and this implies that x is not equal to minus 2. So the domain is equal to all those x such that x is real and x is not equal to plus minus 2. So in the fourth example here we have f of x is given by x minus 4 divided by x square minus 6x minus 16. So it's a similar sort of example as the last one, but here we need that x square minus 6x minus 16 is not equal to 0. Otherwise यानी हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि जहाँ पे ये 0 नहीं होगा. So using the techniques you studied in metric,
you can write this as a minus 8x plus 2x minus 16 not equal to 0. So here x into x minus 8 plus 2 times x minus 8 is not equal to 0, and this gives us x minus 8 into x plus 2 not equal to 0. So the product of two numbers is not 0, then both of them are not 0, is not equal to 0, and x plus 2 is not equal to 0. So this gives us x is not equal to 8 and x is not equal to minus 2. So only at x is equal to 8 and x is equal to minus 2 the given function f of x is not defined, otherwise it is defined. So the domain of the given function is all those real numbers x such that x is real and x is not equal to minus 2 or 8. So that's how you find the domain of the different functions. Restricted domain and range. Up to now we have solved mathematically to find the domains of some types of function. But for some real world problems there may be more restriction on the domain. For example, in the weekly salary function y is equal to 100x plus 5000, clearly the number of units sold per week cannot be negative, यानी आप नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि डोमेन पे ख़ास रिस्ट्रिक्शन है. ऑल्सो दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, सो द डोमेन इन दिस केस विल बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यानी आप जो आइटम है वो फ्रैक्शंस के अंदर यानी आधा आधा करके सेल नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 अप टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. So further, the employer can also put the condition on the maximum number of units sold per week. So in this case the domain will be defined as d is equal to 1 2 up to u, where u is the maximum number of units sold. यानी आपका एम्प्लॉयर ये भी कह सकता है कि मैक्सिमम आप u नंबर ऑफ यूनिट सेल कर सकते हैं, तो इस केस में जो डोमेन होगी वीकली सैलरी फंक्शन की वो होगी फ्रॉम 1 अप टू u. तो इसी तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज इज एविडेंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. Multivariate functions. For many mathematical functions, the value of the dependent variable depends upon more than one independent variable. यानी काफ़ी ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है. Functions which contain more than one independent variables are called the multivariate function. यानी वो फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम multivariate functions कहते हैं. A function having two independent variables is called bivariate function. ऐसे फंक्शन जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों इसको हम bivariate function कहते हैं. So the notation here is z is equal to f of x y. So where x and y are the independent variables and z is the dependent variable. For example, z is equal to 2x plus 5y. ये हमारे पास एक बाईवेरिएट फंक्शन है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है which is z. In general, the notation for a function f where the value of dependent variable depends on the value of n independent variables is given by y is equal to f of x1 up to xn. एंड यहाँ पे हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 अप टू xn जो है वो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 स्क्वायर प्लस 3x3 एंड सो ऑन अप टू 6 टाइम्स xn.
या y इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 प्लस x4 प्लस 3x5। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, 5 है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x3 है वो 0 है, तो इसको हम 0x3 भी लिख सकते हैं। बट दिस टर्म इज सॉर्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा टर्म, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, but still it depends on the 5 independent variables and y is the dependent variable here. So now we move to the types of functions. हमारे पास क्या क्या types of functions हैं? So the first is constant function and second is linear function, बाद है quadratic function, उसके बाद है cubic function, उसके बाद है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद है रैशनल फंक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, उसके बाद कंपोजिट फंक्शंस और एट द एंड डिमांड फंक्शन। So a constant function has the general form given by y is equal to f of x which is equal to a naught, यानी किसी भी x की वैल्यू के लिए हमारी जो आउटपुट वैल्यू है वो a naught होगी। तो यानी x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आउटपुट एक कांस्टेंट होगा। सो वेयर a naught is a real number. For example, y is equal to f of x is equal to 20 is a constant function. Regardless of the values of x. Here the domain is the set of all real numbers, yani t is x such that x is real, and the range is the single value which is just 20. So range where R represents the range of f. So this was the example of a weekly. So this was the example of a constant function. The important concepts which really uses the constant function is the marginal revenue का जो concept है. So this revenue is the additional revenue derived from selling one more unit of a product on service. यानी अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट सेल करें तो उसके ऊपर जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. If each unit of a product sells at the same price, the marginal revenue is always equal to that price. And अगर किसी प्रोडक्ट का एक आइटम सेम प्राइस पे सेल होता है तो marginal revenue will always be equal to that price. For example, if a product is sold for 80 rupees per unit, the marginal revenue function can be stated as the constant function mr is equal to f of x is equal to 80. यानी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर लें x कोई भी हो तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 80, हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा वो हमेशा 80 रुपीज़ रहेगा. So this is the very nice application of the constant function in the business. Next example is linear functions. Definition: a linear function has the general slope-intercept form given by
y is equal to a1x plus a0, where a1, a0 are constants. We have y is equal to minus 2x plus 15. So here the highest degree of the variable is 1, so this is a linear equation. So linear equation जो होती है उसमें highest degree of the variable जो होती है वो 1 होती है. So highest degree of variable is 1. So this function is represented by a straight line with slope and y-intercept. So if you remember the slope-intercept form, then we have the slope is given by a1. Here the slope is a1 and y-intercept is your y-intercept is a0. So the weekly salary function is also an example of a linear function. Quadratic function. A quadratic function has the general form y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c, provided that a is not equal to 0. Because if a becomes 0, then this will be just a linear function. For example, y is equal to f of x, 3x square plus 2x plus 1 is an example of a quadratic function. Or y is equal to f of x, 1 by 4x square is also quadratic or quadratic functions. So in the second example we have seen that we have b and c both 0, but since a is not 0, which is 1 by 4, so this is still a quadratic function. Cubic function. So a cubic function has the general form y is equal to f of x, ax cube plus bx square plus cx plus d. As it is evident from the name, this is a function of degree 3. So we have same condition here, that a is not equal to 0, because a equal to 0 will then categorize this function as a quadratic function, और अगर b भी 0 हो तो फिर ये linear function हो जाएगा, और अगर हमारे पास c भी 0 हो तो फिर हमारे पास ये constant function हो जाएगा. So for example, y is equal to f of x, x cube minus 50x square plus 10x minus 1 is a cubic function. Here we have a is equal to 1, our b is minus 50, our c is 10, and d is minus 1. So next is a polynomial function. So a polynomial function of degree n has the general form y is equal to f of x. Here we have an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1, and we continue a1 x1 plus a0. So where we have a1 up to an and a0 are real constant such that an is not equal to 0. Just like previous function, अगर an 0 होगा तो ये function degree n का नहीं होगा. So a polynomial function of degree n is the
function given by y is equal to f of x is equal to an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n and so on plus a1 x1 plus a naught. So all the previous types of functions are polynomial function. यानी इससे पहले हमने जो constant पढ़ा function also as a polynomial. This is a polynomial of degree 0. Constant function is a degree 0 polynomial. Polynomial function. तो उसके बाद हमने पढ़ा linear function. Linear function is degree 1 polynomial. उसके बाद हमने पढ़ा quadratic function. This is a degree 2 polynomial. And उसके बाद हमने पढ़ा cubic function. This is a degree 3 polynomial. Rational function. So a rational function has the general form y is equal to f of x given by is equal to g of x divided by h of x, where g of x and h of x are both polynomial functions. यानी अगर दो polynomial functions का हम को रेशो की फॉर्म में लिखे तो इसको हम कहते हैं rational function. फॉर एग्जांपल y is equal to f of x is equal to 2x divided by 5x cube minus 2x plus 3 is an example of a rational function. Is rational function. Combination of functions. Functions can be combined algebraically to form a resultant functions. यानी functions को हम algebraic operation से combine करके भी हम एक नया function बना सकते हैं. So if we have f of x and g of x, which are two functions, then these functions can be combined in four different algebraic ways. यानी algebraic method हमारे पास चार हैं जिनकी मदद से हम इनको combine कर सकते हैं. First is sum function. यानी अगर if we have two functions, f of x is equal to 3x minus 5 and we have g of x is equal to x square minus 2x plus 1, then we can sum these functions to get another function. P of x is f of x plus g of x, this is 3x minus 5 plus x square minus 2x plus 1. So this would be equal to x square, 3x and minus 2x को हम combine करेंगे तो ये होगा हमारे पास x, और minus 5 और 1 को combine करेंगे तो ये होगा हमारे पास 4. So this is the resultant function. These were the two functions, and using these two functions we got the resultant function, which is x square plus x minus 4 by summing these two functions f of x and g of x. So also what we can do, that we can find the difference function. For example, if we have h of x is given by x cube and we have j of x which is given by 1 divided by 2x to the power 4, then the function, let's say q of x, which is the difference of these two functions, is x cube minus 1 over 2 x to the power 4. Next is product functions. So if we have two functions, let's take f of x to be the same function 3x minus 5, and we take h of x here, which is x cube, then their product
let's say is a function r of x, which is a product of f of x into h of x. So this is a product of 3x minus 5 and x cube, and this gives us 3x to the power 4 minus 5x cube. Fourth type है कि quotient function. अगर हमारे पास h of x is x cube and our j of x is 1 over 2 x to the power 4, then quotient function, say s of x is h of x divided by j of x. So this is x cube divided by 1 divided by 2x to the power 4, and this goes up, so we have 2 times x cube into x to the power 4. This is 2x to the power 7. So given two functions, we can find a new functions by different combination of these two functions, by either adding them, finding their difference, by finding their product, and also by finding their quotient. So the domain and the range of these functions is the set of values for the both independent variables for which both the functions are defined. यानी इनकी जो डोमेन और रेंज होंगी वो तमाम वैल्यूज पे डिपेंड करेगी जिसके लिए वो दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे. But for the quotient function में we shall remember that the domain is all those values of x for which j of x not 0. अगर हमारा quotient function h of x by j of x है तो इसमें वो तमाम वैल्यूज डोमेन में होंगे जहाँ पे j of x 0 नहीं होगा. Composite functions. So definition. A composite function exists when one function can be viewed as a function of the values of another function. Composite function तब exist करता है जब हम एक function को किसी दूसरे function के terms में study कर सकते हैं. Then composite function y is equal to f of x is basically the composition of these two functions, because we know that y is g of u और u क्या है, h of x है. So this is g of h of x. So this is equal to g composition h of x. So your f is basically here g composition, or we can also call it f of x. So f is basically the composition of both g and h. Here x must be in the domain of h and h of x must be in the domain of g. क्योंकि h of x पे हम h of x g की डोमेन में होगा तो तभी ये नंबर वेल डिफाइंड होगा, और सिमिलरली अगर x h की डोमेन में होगा तो ये h of x वेल डिफाइंड होगा. So now we do the example of composite function. So if we have y is equal to g of u, which is 3u square plus 4 times u, and we have u which is h of x, which is x plus 8. Find g of h of x and g of h of minus 2. So the solution, so y is equal to g of u. So what is g of u? This is equal to 3u square plus 4u. This implies that y is equal to g of h of x, u is h of x, which is equal. So what we do, instead of u we put h of x square plus 4 times h of x. So here what is h of x is x plus 8 square, and here we have 4 times 8. So this is basically the composite function we wanted. We can simplify and write down a simplified version, but I think this is sufficient because the main aim is that we understand how to find the composite function. So if we further simplify it, we get x square plus 64 plus 16x plus 4x plus 32. If we combine the terms, we get
3x square plus 52x plus 226. So now we need to find the g of h of minus 2. So what we do, we just replace x with minus 2. So 3 into minus 2 square plus 52 times minus 2 plus 226. So 3 times 4 plus 52 times minus 2 gives us minus 104 plus 226. This is 226 plus 12 is 238 and minus 104. This is rather 224. You get the answer, which is 132. So that's how you find the composite function, and then find the value of the composite function at certain point, which was minus 2 in this case. So at the end of today's lecture, we study the demand functions. So a demand function is a mathematical relationship expressing the way in which the quantity demanded of an item varies with the price charged for it. Demand functions. A demand function is a mathematical relationship expressing the way in which the quantity demanded of an item varies with the price charged for it. And demand function वो function है जिसकी मदद से हम relationship बना सकते हैं कि जिसमें किसी quantity की demand उसकी price पे किस तरह से depend करती है. So demand function for a particular product is Q of D, where Q is the quantity, QD quantity demanded के लिए है और P price पे लिए है. For example, QD is equal to P square minus 70P plus 1225 is a demand function. We will see the applications of demand functions in the next lecture. So let's review what we studied today. So we started with the definition of functions and ways to define a function, domain and range of a function, multivariate functions and types of functions. So I hope you have liked today's lecture and understood all the topics about functions and how the different type of functions appear in mathematics and why they are useful in this mathematics. So next lecture में हम mathematical functions की graphing और उससे related जो concepts हैं वो पढ़ेंगे. तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.